The nation values this bipartisan struggle against dictatorship waged by the legal fraternity. This indeed raises our hopes in democracy and fighting dictatorship. We salute your courage, your determination in the relentless struggle for the rule of law in Pakistan. This is the 50th anniversary of the Constitution of Pakistan that was given to the country by my grandfather, Qaid-e-Awam Shahid Zulfikar Ali Bhutto, with the invaluable support of all political parties, of the right and the left and the center, whether of democratic and secular inclinations or religious persuasions. The unanimous constitution given by the political parties and leaders at the time also had the backing of all the federating units of our federation. This consensus is no बेहतर कवरेज मिली और एक बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म चाइनीज़ गवर्नमेंट के सतह पे आवाम चाइनीज़ मीडिया में हमें बहुत ही बेहतर कवरेज मिली और एक बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म चाइनीज़ गवर्नमेंट के सतह पे आवाम की सतह पे मीडिया के सतह पे थिंक टैंक्स स्कॉलर्स उनके साथ इंटरेक्शन पे तो एक ओवरऑल एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि चाइनीज़ साइड हमारे साथ कनेक्टिविटी में और वाइस वर्सा हमारी तरफ से भी मैं समझता हूँ उसी तरीके से एक एक्स्ट्रा माइल जाकर जो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी उस फ्रेमवर्क में रहते हुए बड़ी मुफीद और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको बिल्ड करते हुए हम इंशाल्लाह जब एक मैंडेटेड हुकूमत आएगी और उनको हैंड ओवर करेंगे ये कंटिन्यूएशन जो है उसका एलिमेंट और उसका जो शेड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है चाहे पाकिस्तान में किसी किस्म की हुकूमत हो उस हुकूमत का तसलसल चाइना के साथ जो ताल्लुकात के हवाले से है वो सिम्बॉलिकली अहमियत का हामिल है और उस तरफ ये एक्नॉलेजमेंट आई है ये रिकग्निशन आई है कि पाकिस्तान की जो कंटिन्यूएशन है इन एंगेजमेंट एंड डीपनिंग फर्दर टाइज वो बड़ी सिंसेयर और विजिबल हैं और एग्जिबिटेड हैं और इससे अनसर्टेनिटी के जो एलिमेंट बाज़ औक़ात अगर कोई क्रिएट होने की कोशिश भी करता है या आती है वो एड्रेस हो जाती है एक तो ये मल्टीलैटरल फोरम था BRI का जो प्रेसिडेंट शी का विज़न है वो ट्रूली अप्रिसिएशन डिज़र्व करता है कि वो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उन ग्लोबल चैलेंजेस का आंसर जो उन्होंने अपने 8 प्रपोजल्स जिनका ओपनिंग सेरेमनी में उन्होंने उसको अनरावल किया अनाउंस किया उसका तस्करा किया कि ये इम्पेटस होगा फॉर न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ ये न सिर्फ चाइना के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है बल्कि चाइना के साथ साथ ये पूरे रीजन और अक्रॉस द रीजन ग्लोब के लिए करता है हमारे यहाँ शायद अभी तक BRI की जो एप्रिसिएशन है वो उस सतह की नहीं है जो होनी चाहिए ये ओशंस को ये लैंड रूट्स को ये एविएशन के सेक्टर में एयर कनेक्टिविटी को कुर्बत भी पैदा कर रही है और उस कुर्बत के साथ साथ जो है ना एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच के तहत लोगों को मौके फराहम कर रही है कि वो उससे माशी तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें समाजी तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें और एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी या जो लाइफ स्टाइल है उसको अपना सकें पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है हमारी तरफ से प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन जो 3 स्लोगन्स हम वहाँ से लेकर आए हैं वो ये है कि इस पे फोकस रहे और जब ये 3 फेसेस आप जो है ना वो मेरिट के बेसिस पे करें कंसल्टेशन ठीक कर लें कोऑर्डिनेशन कर लें कोऑपरेशन कर लें तो जो डिज़ाइन आउटपुट उसका होता है जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इंतहाई आसानी से चला जाता है क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं आपने उस पर गौर व फिक्र कर चुके होते हैं दो के ये मल्टीलैटरल वो था फोरम था लेकिन हमारी बड़ी बायलैटरल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई
प्रेसिडेंट शी के साथ, प्रीमियर ली के साथ, उनके पोलिट ब्यूरो के लोगों के साथ, उन्होंने बैंक्वेट भी हमें दिया, उनके मुख्तलिफ जो बिज़नेस लीडरशिप थी, स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट बोथ, ये भी मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि शायद अब चाइनीज़ प्राइवेट एंटिटीज़ जो बिज़नेस की हैं वो भी पाकिस्तान में इस सेकंड फेज़ जो BRI का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे रिलेटेड जो एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, माइनिंग है, वो एंटिटीज़ की एक सीरियस पार्टिसिपेशन होती हुई नज़र आ रही है. हमारी जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. उसके चीदा पॉइंट भी हम आपके साथ रिटन फॉर्म में भी शेयर करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारे ट्रेडिशनल कश्मीर पे जो स्टांस है वो अकॉर्डिंग टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन. अब ठीक हो गया? वो उसको सपोर्ट किया और हमारी तरफ से जो हमारा रवायती जो कोर चाइनीज़ इंटरेस्ट है, वैल्यू सिस्टम है उनका, उसके लिए हमने अपनी पोजीशन को रीट्रीट किया. तो वो स्ट्रेंथनिंग जो हमारे रिलेशनशिप की है उसको हमें पता है रीजन में भी उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, बाकी आउटसाइड रीजन भी ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, लेकिन ये जेस्चर को एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, इट वाज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे केनियन प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ, इन सब के साथ काफ़ी फ्रूटफुल और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट्स हुई, न सिर्फ मेरी बल्कि पूरी की पूरी टीम की. और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइवेटाइजेशन के, एनर्जी के मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, हर कैबिनेट मेंबर ने अपनी अपनी जगह पर इनिशिएटिव लेड, इनिशिएटिव बेस कंट्रीब्यूशंस की. I was feeling कि I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. तो वो एक जो टीम का फ्लेवर था वो मिल रहा था. फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फ़लस्तीनियन इशू पे जिस इफ़ेक्टिव अंदाज में जॉइंट को होस्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ, जद्दा में जो कॉन्फ्रेंस थी और पाकिस्तान की जानिब से जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस वहाँ पे थी मिडल ईस्ट के क्राइसिस में, वो वहाँ की, और फिर वो पूरी करने के बाद वो बीजिंग तशरीफ़ लाए. हमने मुख्तलिफ लीडरशिप के साथ मिडल ईस्ट के सिचुएशन को रेज़ किया, इंक्लूडिंग रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज़ लीडरशिप एंड श्रीलंकन्स के साथ, इवन केनियंस के साथ भी इस पे हुए. बल्कि केनियन प्रेसिडेंट के साथ एक और आपकी ज़ाहिर है बरादरी के हवाले से ओवरऑल एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के हैसियत से एक इम्पॉर्टेंट इशू था. अरशद शरीफ साहब के कत्ल केस को हमने परसू किया, रेज़ किया कि ये अपने जो लीगल कंक्लूजन है उसकी तरफ जाना चाहिए, और अगर कोई कल्प्रिट्स आपकी अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आपके पास है तो हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमारी तरफ ज़ाहिर है ये बड़ा डीप कंसर्न मौजूद है कि उस इवेंट का और उस इंसिडेंट का क्या हुआ. तो उन्होंने हमें रीअश्योर किया कि काफ़ी हद तक हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग हैं वो भी कंक्लूड होंगी, और हम 2 विजिट्स का उन्होंने हवाला दिया कि आपकी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ कर चुके हैं और अगर मज़ीद भी होगा. In 2018, the judiciary once again became a partisan actor with clear favorites in the election. It is hoped that this time it will be different. That is, of course, if we have elections. My party has been demanding an election date and schedule since Parliament's term ended, to no avail. Regardless of my well-known opinion on 90 days, which may now have become a moot point, our right to have an election
is absolutely indisputable. At the time of the conflict over elections in the provinces in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, my party and I made every effort, and the most sincerest effort, for political dialogue, political consensus, to resolve a constitutional, political, and democratic crisis. Our aim was to reach a consensus on election dates, not only for the province Pakhtunkhwa, not only for the province of Punjab, but also for the general election. Unfortunately, the events of May 9th stymied these efforts. And today, we find ourselves where we are. Let us be clear, ladies and gentlemen, elections delayed are elections denied. The only path forward is for the Election Commission of Pakistan to immediately release the date of the election and the schedule of the election without any further delay. Given the events that we witnessed over the weekend, I trust there shall be no further delay. It is only through a free, fair, and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. When I was Foreign Minister of Pakistan, I met with a prominent foreign minister from a country where they don't have elections. They don't understand elections. And I was asked, what are these elections? Why do you need elections? And I explained that the people of Pakistan are a very emotional people. हमें अपना भड़ास निकालने के लिए ये इलेक्शंस बहुत जरूरी। मेरा शक्ल आपको पसंद ना आए, 5 साल अगर मैंने कोई गलती की, कोई जुल्म किया, तो पाकिस्तान के अवाम के पास वो एक ही दिन है, एक ही दिन है कि मुझसे हिसाब लिया जा सकता है। और इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, इसलिए ये जो आईन हमें इलेक्शन का हक देता है, वो कायदे अवाम का दिया हुआ, बनाया हुआ आईन है। इसलिए कि इस आईन की बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना जान की कुर्बानी दे दी। इसलिए कि सदर जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की सूरत में इस आईन को बहाल करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 30 साल की सियासी जद्दोजहद को, वो नामुकम्मल जद्दोजहद को मुकम्मल कर दिया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। मगर हम चाहते हैं, डिजायर ये है कि इसके बजाय कि कोई और इदारा हुक्म दे कि इलेक्शन कमीशन अपनी तौर पे अपना कानूनी और आईनी जिम्मेदारी मुकम्मल करके ये काम खुद कीजिए। Now let me go back to the judiciary, Supreme Court bar. I expect that in interpreting the Constitution, the judiciary will expand the powers of all democratic institutions, not merely its own. We have, however, witnessed that in interpreting the Constitution in the past, the judiciary has enhanced only its own powers
and undermine that of other institutions. We value the independence of the judiciary. It is a cardinal principle of a democratic society. However, I sometimes feel that the independence of the judiciary has taken far too far to mean its independence from the law and the Constitution itself. We believe in accountability of all under the same law by the same institutions. Independence of the judiciary should not mean its independence from accountability. A reference was filed by over 100 civil society representatives from all walks of life against a Chief Justice of Pakistan while he was holding office. The reference was not heard by the Supreme Judicial Council for as long as the Chief Justice held the office of Chief Justice. When he retired, the reference was returned to the petitioner as having become infructuous. This raises some serious questions about accountability, particularly because honorable judges are so fond of claiming and proclaiming their fondness for accountability, particularly when it comes to civilian political leaders. कहते कि एहतसाब होना पड़ेगा. हर वजीर आज़म ने अपने आप को इस इदारे के सामने एहतसाब के लिए पेश किया है किसी न किसी सूरत में. तो फिर one would imagine that the honorable judges would be the first to present themselves for accountability before their own accountability institutions. Here I would like to make mention of more recent developments that have raised our hopes. Members of the bar may or may not agree with me, but the recent decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the parliament, from the prime minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में. तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary, of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct,
and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की, उस आइन के बहाली के लिए और अपना वालिद के लिए, कायदे अवाम के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद शहीद हो गए। ना वालिद को इंसाफ मिला और अफसोस के साथ ना हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ दिलवा सके। फिर सदर ज़रदारी ने 2011 में रेफरेंस फाइल किया, इंसाफ नहीं मिल सका। 2018-19 में मैं खुद पिटिशन लेकर आया कि मुझे इस केस का पार्टी बनाया जाए और रेफरेंस फौरन जो है वो सुना जाए। आज 2023 में मैं आपके साथ हूं। अब I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, पार्टी-लेस इलेक्शंस की चुने जो गवर्नमेंट IJI किसी को याद है तो वो भी गिन ले, और हाल ही में जो हमने सब कुछ देखा है। और this is what I call the old way of doing politics, the tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, हमने ये consensus देखा है,
اور ثابت کر دیا ہے جب یہ ہم کنسنسس سیاست کرتے ہیں, کنسنسس جمہوریت کرتے ہیں, تو پھر ہم کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو 1973 میں 1973 کانسٹیٹیوشن کی صورت میں دیکھا تھا کہ سرزمین بے آئین کو آپ نے آئین دلوایا. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 18ویں ترمیم کی بحالی میں پہلے NFC ایوارڈ 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں اینڈ ایون نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلے کرنے میں کی صورت میں ہم نے یہ کنسنسس ڈیموکریسی کو چھوٹے چھوٹے ونڈوز کے لیے شارٹ پیریڈس آف ٹائم کے لیے ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اینڈ اٹ از ان دس ویری اسپرٹ of consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا. نہ صرف within institutions but between institutions also. یہ کنسنسس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان اور باقی کے اداروں کے درمیان بھی. ہمیں اور یہی کنسنسس ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. یہی کنسنسس ہی سوچ تھا جس کی وجہ سے ہم نے PDM کے ساتھ دیا, جس کی وجہ سے ہمیں وزیر بنا کہ ہم نے تو سارے جو پرانے برائیاں تھے ان کو درست کرنے تھے. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا. سارے سیاسی جماعتیں مل کے ہم نے تو ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا, پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا, آئین کے مطابق چلنا تھا, ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں, کیسے کنسنسس کے ساتھ مل کے پرانے مخالف ساتھ مل کے بھی جو ہے جمہوریت کی ترقی کے لیے, آئین کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ساتھ مل کے کام بھی کر سکتے ہیں. اگر اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتا چلا ہے کہ ایک فریز ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions, تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے. ہم نے تو پارلیمان کا جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنا تھا. راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے. واہ جی واہ. Anyway, میں مایوس نہیں ہوں, کافی کچھ سیکھا ہوں مگر مایوس نہیں ہوں. And on the 50th Golden Jubilee یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں that our democracy is stronger today than it was yesterday, but اتنا ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا پاکستان کے آنے والے نسلوں that their tomorrow will be better than our today. The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا, within parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ ہائپر پارٹیزنشپ, ہائپر پولرائزیشن, اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے, شکل دیکھنا نہیں چاہتے. اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas
for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country, with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan. And there'd be no better way than to celebrate our golden jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. आप सबका बहुत शुक्रिया. Thank you. बहुत शुक्रिया. वो उनको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं तो हम अपने मुल्क में ट्रांजिट स्टेटस उनको नहीं अवेलेबल करेंगे. क्या वो इल हैं? वो इलीगल नहीं है. वो तो यहाँ पे रजिस्टर हो गए हैं. उनकी लोकेशन का हमें पता है, उनकी फ्यूचर डेस्टिनेशन का हमें पता है. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उन अफगान्स की जो गैर कानूनी तौर पे 40 साल से 45 साल से यहाँ मुकीम है और वो भी हमारे दुश्मन नहीं है. हम ये अर्ज कर रहे हैं कि वो वापस जाएं, अपने